Now, starting off with the past papers for transport and mammals. Now, the first question that we have is a combination of transport and mammals along with transport nutrition as well. ठीक है? Now, अब होता हमारे पास क्या है? अब वो कह रहे हैं figure 4.1 is a flow diagram showing the pathways taken by oxygen and carbohydrate in their absorption into the mammal's blood to be used in the liver. ठीक है? भाई now now आप हो क्या रहा है? देखो कहने का मकसद क्या है? They've asked us to tell them कि अच्छा अगर हमारे पास दो सब्सटेंस है ऑक्सीजन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, how are they going to go towards the liver and what are they going to do in the liver basically? ठीक है? अब अगर हम लोग यहाँ देखें, let's talk about the oxygen first. The oxygen goes into the lungs through what? Lungs के अंदर एक small packets of air होती हैं which are called as what? The alveoli, right? So they're absorbed through the alveoli, and then from the alveolus oxygen is going to move into the blood, right? सबसे पहले कौन सी वाली वेसल में जाएगा? Pulmonary vein. So if you're going to look here, if you're going to go back up all the way back, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि लंग्स से और फ्रॉम द एल्वेओलस ऑल द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब विल गो इनटू द पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन से ही हमारे पास ऑक्सीजन किधर जाएगी? इट्स गोइंग टू गो इनटू द हार्ट एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इट्स गोइंग टू गो इनटू द aorta, right? And from the aorta, which vessel will take it towards the liver? The hepatic artery. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? और ये ऑक्सीजन कौन से प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होगी? दिस ऑक्सीजन विल बी यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. All right. Now, if you would talk the very same way, if we are going to talk about the carbohydrates, the हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास carbohydrates, whether it's glucose, whether it's fructose, whether it's galactose, they are going to be absorbed in the what? In the third part of the small intestine called as the ileum. Through what मेरे बच्चों? हमारे पास absorption के लिए क्या चीज होगी? हमारे पास होंगे microvilli, right? The micro once absorbed in the microvilli, the glucose will go towards the liver through कौन सी वाली vein? Hepatic portal vein. Remember? ठीक है? मुश्तबा विलाय टिश्यू है, उसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक एक्सटेंशन जो होती हैं जो और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज करते हैं बेटे, वो क्या होती हैं? माइक्रोविलाय. ठीक है? सो आइदर राइट माइक्रोविला, आइदर राइट विला, यू विल गेट अ मार्क. एब्जॉर्प्शन दोनों कर रहे हैं. Mipsum define homeostasis बेटे. अच्छा खैर. So once these blood vessels are used by are taken up by the hepatic portal vein, they will be transported to the liver where the glucose is either going to be used for respiration. अब देखो मैंने यहाँ respiration लिखा है, जरूरी नहीं है कि मुझे aerobic या anaerobic, मैं aerobic या anaerobic लिखूं. ठीक है? If it's respiration, glucose can be used for both of the respirations. दूसरी चीज हम लोगों ने एक और क्या पढ़ी थी कि हमारे पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर ये एक्सेस के अंदर होंगे इन टू प्लेसेस इन आवर बॉडी, इन द लिवर और किधर? मैं सब तो मुझे ये बताओ कि ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड एंड स्टोर्ड इन ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड इन व्हाट अदर ऑर्गन? In the skeletal muscles. In the skeletal muscles, guys. Focus on this, Mipsam. Focus on what has been, what is important. So it's going to be absorbed where? It's going to be stored in the skeletal muscles and the liver as what? Glycogen. So what is the process that converts glucose into glycogen? हम कहते हैं कि भाई हमारे पास मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड कौन से वाले प्रोसेस में कन्वर्ट, कौन सा वाला रिएक्शन कन्वर्ट करेगा उनको? कंडेंसेशन. ऑलराइट, वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ अच्छा, so we've done this. Now, वो कह रहे state of waste product formed from proteins in the liver.
तो हमने पढ़ा था, तो हम लोग अगेन इन बायोलॉजिकल डाइजेशन ओनली, कि भाई हमारे पास द लिवर अंडरगो द इन द लिवर प्रोटीन्स अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड एज डी amynation to be converted into what? Urea. All right. अच्छा, अब मुझे एक बात ही बताओ before moving on to the next question. We made a list of biological molecules, right? Sorry. We made a list of biological molecules, right? हमने कहा था कि भाई हमारे पास ना कार्ब्स भी होते हैं, हमारे पास लिपिड्स भी होते हैं, और प्रोटीन्स जो हैं ये सारे हमारे पास क्या हैं? They're all biological molecules. And these biological molecules are basically organic molecules that are made up of different chemical elements. अब वो हमारे पास केमिकल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास कार्ब्स और लिपिड्स के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन होता है। प्रोटीन्स के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। प्रोटीन्स के पास एक और हमारे पास केमिकल एलिमेंट कौन सा होता है? नाइट्रोजन। So anything that is coming or that is being produced by the protein will also contain nitrogen. ठीक है। अच्छा जी। नाउ अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि भाई कौन सा वाला स्टेट सजेस्ट अ केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट इन द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन फैट। तो इस यूरिया के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, फैट के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। आप इन दोनों में से कोई से इन तीनों में से कोई से भी बता दें। यू कैन टॉक अबाउट कार्बन, यू कैन टॉक अबाउट हाइड्रोजन, यू कैन टॉक अबाउट ऑक्सीजन, राइट? कोई सा भी एक बता दें आप। ओके। नाउ दूसरी चीज, वो कह रहे हैं नेम अ केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट इन द वेस्ट प्रोडक्ट और यूरिया दैट वुड नॉट बी नॉर्मली फाउंड इन फैट। That would not be found in fat. Nitrogen. Nitrogen is specific to the proteins only, right? वो फैट्स में तो कभी भी नहीं होगा। मेक सेंस गाइस? डज एवरीवन गेट दिस? सबकी वाली बात समझ में आ रही है? ऑल राइट। नाउ अब लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, फिर हम लोग बात में विल डू द क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास। ओके, वो कह रहा है फिगर 4.1 शो द सेक्शन थ्रू अ स्मॉल सरफेस वुंड ऑफ द स्किन। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ स्कैब बन गया है। वी हैव दीज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स। व्हाट डू वी कॉल दीज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स? इनसॉल्युबल कौन से वाले प्रोटीन्स? फिब्रिन मॉलिक्यूल्स, राइट? उसके अलावा व्हाट डू वी सी इज दैट द रेड ब्लड cells are unable to go out anymore, but the bacteria has infiltrated. Now this bacteria is being killed by two white blood cells. One of them is producing something while the other one is engulfing them. ठीक है। अच्छा जी। अब वो कह रहे हैं नेम द स्ट्रक्चर ओ एंड द टाइप ऑफ द ब्लड वेसल शोन इन फिगर 4.1। तो ये ओ कौन सा वाला सेल है? इट्स अ फेगोसाइट। ये पैथोजेंस को खा जाता है, इट इनगल्फ्स द पैथोजेंस, राइट? देन ये ब्लड वेसल कौन सी है? हमने कहा कैपिलरी है। हाउ डिड आई नो दैट इट्स अ कैपिलरी? आई कैन एक्चुअली अप्रिशिएट दैट इट्स ओनली वन सेल थिक। दूसरी बात, आई कैन एक्चुअली सी सब्सटेंसेस लीकिंग आउट ऑफ देम, राइट? दैट मीन्स इट्स पोरस। अब उसने वही वाली बात पूछी है कि भाई स्टेट टू फीचर्स दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टाइप ऑफ द कैपिलरी और द ब्लड वेसल पी। कि स्पेसिफिक बातें बताओ जो हमारे पास कैपिलरीज के बारे में हो। यू नो दिस बी स्पेसिफिक अबाउट द कैपिलरीज। सो वी सेड द कैपिलरीज आर वन सेल थिक एंड दे आर व्हाट? एंड दे आर porous. Tissue fluid is not a property of the capillary. Tissue fluid is not the property of the capillary. Okay, how did you identify that this capillary by its structure? What was its characteristic? Right, so they're one cell thick and they're porous, they have pores. ठीक है। फिर हम बता देंगे, वो कह रहा है कि भाई एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग टू द बैक्टीरियन फिगर 4.1 एट एम एंड एट एन। अगर हम लोग एम पे देखें, सो मुझे पता है कि मेरे पास ऐसे जो सेल्स होते हैं विच आर राउंडेड,
and they're producing something. ये कौन से वाले cells होंगे मेरे बच्चों? These cells will be called as lymphocytes. And what will these lymphocytes produce? Antibodies. So हमने बता दिया कि भाई these lymphocytes will produce antibodies which is going to kill the antigen. N N के ऊपर क्या हो रहा है? हम कह देंगे the phagocyte. Now this white blood cell is a phagocyte. The phagocyte is killing the antigens by engulfing them. And this process is called as what cytosis? Phagocytosis. Very good. तो हमने कहते भाई at M, lymphocyte produce antibodies killing the bacteria, while at N, the phagocyte engulfs the bacteria through what process? Phagocytosis. All right, guys, any problems so far? Okay. Now moving on. Explain how the wound is being sealed in the region under the scab. ठीक है? अब हमें पता अब हमने ये पूरी चीज we actually written it down when we're talking about the clotting mechanism. ये पूरी चीज तो हम यहाँ भी बता देंगे. Sorry. तो we're going to tell them here as well कि जो injured endothelial cells होंगे वो प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करवा देंगे? थ्रोम्बिन के अंदर. और थ्रोम्बिन क्या करेगा? सॉल्युबल फिब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट कर देगा. और ये इनसॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड्स किसको ज्वाइन अप कर लेंगे? प्लेटलेट्स को. ताकि क्या बन जाए? ब्लड क्लॉट्स बन जाए, which are going to prevent the red blood cells from leaking out and which are going to also prevent entry of pathogens. All right. So we'll stop here today. Now, अब इसको देखो before stopping. इसने ये जो बातें ब्रेक करके दी हुई हैं, यहाँ उसने क्या बोला हुआ है कि भाई person cuts their hand on a glass while picking it up from the ground. Describe how the body's defense mechanism will protect it from you know infection for 8 marks. यहाँ पर हमें clotting भी बतानी है. यहाँ पर we will talk about the white blood cell as well. All right. So we'll just stop here today. We'll look at the next question in the next class. And before going on with the new chapter, we're going to complete this worksheet. I hope you guys have a good day.